I'll flood you with informations and concepts. Now we'll making base for the society class and for that of the modern history class. Here and B and for the essay class, I'll give you enormous things now because uh, we still have that flavor of the Vedic age. How mane seita aji janke kemiti continue karuchi. We'll try to see those parts. We'll try to mend out our prelims and mains simultaneously. Now let's start. Try to understand. Atlas धरी वस्तु तो समझते हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, good. जहाँ पाखर नहीं, अरे Atlas नहीं क्या सब? खुली वो सब. It is needed today. Okay. Now listen. Indus Valley civilization has collapsed. Why it has collapsed, we do not know. So various theories were there. Few of the theories we took yesterday. Agreed. तापरे 250 वर्ष कौन हैला हमें जानू 250 years what happened we do not know, but from the flourishing cities पूरा लाइन वाला सुन जा a class है मन रखे. From the flourishing cities again we directly started from nomads. माने village भी नुह. Nomads माने गोटे tribal community. Tribe माने कौन I will tell you. एबे खाली मन था गोटे tribal community गोटे जागरू आवर जागरू move करूची. से सेटल्ड लाइफ नुह ता माने नुह कि एग्रीकल्चर नथिला से सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ नथिला. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. प्रीलिम्स रे मैक्सिमम पिला एटी भूल करंती गोटे क्वेश्चन लिखियो नोमाड्स थिले तापर लिखियो कि एग्रीकल्चर नथिला. एग्रीकल्चर थिला सेटल्ड एग्रीकल्चर नथिला. प्रोबेबली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ताले थिबो. विल डील विथ दिस थिंग्स. जस्ट वेट एंड वॉच. Indus Valley civilization declined. 250 years तापर कौन हला हमें जानी पालुनी. Evidence तापर कहूची. Next evidence are showing this. What? Evidence तापर कहूची कि then another life form came into picture. जोटा की कौन थिला ना nomadic tribes थिले. From flourishing cities, not even villages were there. The nomads माने गोटे जगह रो आवर जगह को move करथले. Under all this history had been given by British when we were slaves to them. British का thought process हमें modern history class रे करिया. I can give you 5 to 10 arguments which will nullify the Aryan invasion theory, but they have said it. We have no other option, so none of you will question the Aryan invasion theory now. Under these circumstances, semana कहउचंती ना कोन Aryans एटा कोड एविडेंस पर्सन semane ठीक है सुनिबा. We will start the complicated class or we will make our class very complicated now. British कहउची Aryans were Persians from the Central Asia. Hopefully you know where is Persia. If you do not know, I can show you by sharing the screen, but open your world map रो पेज नंबर मन रखे. आटलास धरी की बसिबो. वर्ल्ड मैप खोले से थरे देखे. आई होप यू कैन सी आउट. ओके लेट मी शो ऑफलाइन. लेट मी शेयर स्क्रीन नाउ. Understand this fully. Can you see my screen? Yes, sir. See, India map it is full वाला. India, Pakistan, so this was full India. So the cross करिबू if you move towards the west, एटा होची Indus Valley civilization zone टा. तो जेमिति वेस्ट आउट को मूव करिवो द डेजर्ट जोन विल गेट स्टार्टेड. ए तो सब हॉट डेजर्ट राइट. तो एटा क्रॉस करी यूरोप रे पसिबल. इफ यू क्रॉस दिस मेडिटेरेनियन सी यू विल एंटर द यूरोप more or less, if not fully. This is a cold desert. This Western Asia is a hot desert. This hot desert and the cold desert is getting separated by this Mediterranean Sea. Thus eta kothla na African tribal culture thila. So hence all the culture of this world was more or less within this zone. We'll see what does that mean. Acha. Before going there, let me show you another thing.
We are making the base, huh? Today's class will be bit complicated. So just listen this. See, understand joti doubt ha pacharibu. I do not want any compromise here. If this is India, this is Himalaya, try to understand. Now we are understanding the concept of Bharatavarsha, Bharata or Hindustan, right? Understand this. It is the India geographical map hela. This is Himalaya. It was not easily possible. Rather, those days, earlier days, it was impossible to enter this landmass of the world through by crossing Himalayas. तमे एपटे northern side रे India भितर पस परिबनी बुझी होची कारण एठी हाईएस्ट माउंटेन कॉर्डिलेरास अछि वर्ल्ड एपटे पसेलानी एपट पार्टा होची कोन ना फॉरेस्टेड हिमालयस एपटे भी तमे पस परिबनी ए लैंडमास भितर एतक होची ओशन भितर भी तमे पस परिबनी एठी होची कोन ना द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एठी डेजर्ट कहला रहीगला 10 वर्ल्ड रो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जोन भितरे तमे को पटे भी पसी पारिलनी जदी पसी परिवो ए माउंटेन रे किछि पासेस अछि दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न पासेस नॉर्दर्न जोन ईस्टर्न जोन रे तमे ए लैंड मास भितरे पसी पारिबनी कारण हिमालयन कॉर्डिलेरास अछि ईस्टर्न जोन रे सदर्न जोन रे वेस्टर्न जोन रे इंडियन ओशन अछि तमे इजीली ए लैंड मास भितरे पसी पारिबनी एठी ग्रेट डेजर्ट्स अछि तेनु करी एपटे भी पस परिबनी हिमालय रो किछि जगह रे माउंटेन अफगानिस्तान पाकिस्तान जोन थई माउंटेन पासेस अछि only way to enter this beautiful landmass of this world is through this northwestern passes NWP जथर मु कहबी NWP बुझी जो चुपचाप northwestern passes mountains रो northwestern passes through रे ही तो हमें इंडियन ए जो सब कॉन्टिनेंट भितरे पसी परिबो एति बुझेला यस सर नॉर्थ रु पस परिबनी बुझेला सिमिलरली एपटे ओशन अछि पस परिबनी एति डेजर्ट अछि पसी परिबनी thus only way to enter is through this northwestern passes thus all the attacks on Indian history on this landmass will be mostly only through this northwestern passes unless and until Britishers are coming to India through sea जतोले ब्रिटिश न आछि और व्हाइट्स यूरोपियन जतोले न आछंती सेतबन जाके इंडिया पर अटैक सबले नॉर्थ वेस्टर्न पासेस रु हबो दिस इज वन ऑफ द नॉलेज यू जस्ट कीप इट एज ऑफ नाउ एति क्लियर हला यस सर now listen under the circumstances now I have stopped it now imagine on your map imagine कहबी करिबू we want to clear this exam India रहिला imagine on the map ऊपर हिमालय अछि नॉर्थ वेस्टर्न पासेस एटलास खोली बस समस्ते बुझियोची now listen सी कोची now see your map India cross कले पाकिस्तान सेतोले it was one part only Pakistan cross कले तू पहुंच जो कोठी सी on map it is Iran Aryan invasion theory कोची Iranians माने because understand the line because of their capability and hold on the horses घोड़ा को ऊपर तकर कोन थिला ना कंट्रोल थिला so they were a better warrior class thus they have entered India which includes Pakistan through that northwestern passes and entered और एठा लोकों को मारी देले निजो को एस्टैब्लिश करेले we'll see that story also that is basically called as Aryan invasion theory. Then the second question arises why the Persians or the Iranians were so eager to come to India because again the Britishers are saying this because
तू से इंडियन सबकंटिनेंट पार्ट को जतले क्रॉस करिकी सुनिउ ठीक रे इंडियन सबकंटिनेंट पार्ट को क्रॉस करी जतले वेस्टर्न पार्ट को जाउछु डेजर्ट स्टार्ट ही जाउची ताकर ज्योग्राफी फेवरेबल नुह hence they have what na scarcity of food India or Indian subcontinent or that Indus Valley zone was highly rich and fertile and has got grasslands thus they came here for a better geography and settlement thus it was very natural that the outsiders will always invade India बुझियोची कारण इंडिया नथिंग ऑन मैप इंडिया क्रॉस करके विजुअलाइज ऑन मैप एंड सी ऑन मैप इंडिया क्रॉस करके ऊपर को जिबु दैट इज आल्सो डेजर्ट सेंट्रल एशिया इज अ डेजर्ट स्टोनी डेजर्ट तो इंडिया रो वेस्ट को जिबु इट इज अ सैंडी डेजर्ट मेडिटेरियन क्रॉस करके यूरोप को जिबु दैट इज अ कोल्ड डेजर्ट स्नोई डेजर्ट so everywhere it was surrounded by a desert thus these people will always try to come to India. World history is incomplete without Indian history. We have always given food and shelter to these people. In return, we got enslaved by them because they lack dharmic concepts. Dharmic concepts kona kali class rahi chi. I'll repeat these things one, time and again. I repeat, India ra north ku jibu you'll cross Afghanistan and you'll reach somewhere called as Central Asia. India ra northern part ta stony desert to Pakistan cross करके west रे पसिबु सेटा जो sandy desert Arabs sandy deserts Mediterranean cross करिवु तापर यूरोप रे पहुंचिबु तू that is snowy deserts so all this big geography had always been dependent on India for food and shelter unfortunately to be enslaved by them for 1,000 years that's a different thing but our forefathers has always given them food to eat इति बुझेला Yes, sir. Yes, sir. now listen now this Aryan invasion theory says Persia ru semane pasile India vitare for this beautiful geography and surplus of food again Aryan invasion theory is saying this now Aryans literal meaning hochi civilized now Aryans who came from the Persia has got horses and they were pastoral nomads tako pakare cattle and sheep thile pastoral nomads semane thus as they were pastoral nomads semane northwestern passage deki India vitare pasile बुझ जदि नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज देखि इंडिया भीतर पसिबे ताको आगे प्रथमे पड़िबो पाकिस्तान का आई होप यू आर गेटिंग मी और यू वांट मी टू शो दैट ऑन मैप वंस अगेन गेटिंग मी Yes, sir. Yes, sir. ताको आगे प्रथम पड़िबो पाकिस्तान जोठी इंडस वैली लोक तक रहिथिले thus this could be a probable theory horse has played a very strong role for the established terms semane asile ethi लढिले हमकु हरेले hence we got enslaved thus according to the British or Aryan invasion theory we were old slaves तनको ब्रिटिश कोची do not worry Indians हमें तुमको आसी कि नुआ स्लेव बनेनु your slavery is as old as 1,000 years back when the Persians truly came and enslaved you for the first time so this was the essence of Aryan invasion theory so that they can morally satisfy the Indians that Indians were not new slaves they were slaves as old as by 1,000 years back we was enslaved by the Persians clear इटा रुमा चप्पल थिला थाउ था बोलना कौन कुछ कविता just a minute so this is the basis of saying Aryan invasion theory that British तुमको कहूची कि देखो तमे नुआ स्लेव्स आमे तुमको आसी नुआ स्लेव्स करिनु that was the time when Indian nationalism was rising up they need to justify that we are not new slaves for that justification they come up with that own theory and they have written our whole ancient history in a very specific way right
including that of the medieval history also in a very specific way, so that we can get enslaved. Thus, this creates question mark on that of the Aryan invasion theory. Bujala? Yes, sir. Good. How rest of the things we'll see. Let's start से कौन कौची think practically जदी तापर से कहउचंदी देख से कहउची पर्शियन जोन रे अंडरस्टैंड दिस पर्शियन जोन रे किंबा सेंट्रल एशिया जोन एज अ होल रे देयर वर वेरियस ट्राइब्स ट्राइब माने नुह ट्राइब माने a small group of people living collectively and providing safety, security and food to each other with within that collective unit. That is called as tribe. That's it. Unit of people staying collectively, giving food, safety, nutrition to each other. That is called as tribe. तेणुक सेंट्रल एशियन जोन रे ठीक है सुनिबा सेंट्रल एशिया रे सेंट्रल एशियन ट्राइब कोला था कैट जतले कहबी कैट तू जान जू सेंट्रल एशियन ट्राइब्स Central Asian tribes were fighting against each other. That is natural. गोटे कैट आउ गोटे कैट संगे रे लड़ुथुला सेंट्रल एशिया रे जोड़े कैट लड़ले सेंट्रल एशिया ट्राइब वर्सेस सेंट्रल एशियन ट्राइब्स इन सेंट्रल एशिया और इन पर्शिया गोटे कैट आउ गोटे कैट को हरई देला जो कैटटा हारी गला जितिया ट्राइब रो से स्लेव्स हे जिवो ताली ये स्लेव्स हे गला या ऊपर सप्रेशन हबो जो कैटटा हारी जाईची से सेंट्रल एशिया छाड़ी की नॉर्थ वेस्टर्न पासेस पटे पसी की इंडिया रे पसी थ्योरी कोची को थ्योरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जेटो आई रिपीट सेंट्रल एशियन ट्राइब वर्सेस सेंट्रल एशियन ट्राइब इन सेंट्रल एशिया और इन पर्शिया यदि ये हारी गला ये नॉर्थ वेस्टर्न पासेस क्रॉस करी के आसी की इंडिया रे पसला तले इंडिया रे पसिला इंडिया भितरे इंडियन ट्राइब्स भी थिबे तेणु करी इंडियन ट्राइब्स वर्सेस सेंट्रल एशियन ट्राइब्स हला इंडिया भितरे एति बुझला Yes, sir. Yes, sir. I am making the base for caste system ए क्लास रे सब जिंसर बेस पडियो तो क्लास विल गो बिट कॉम्प्लिकेटेड सेंट्रल एशियन ट्राइब वर्सेस सेंट्रल एशियन ट्राइब इन सेंट्रल एशिया और इन पर्शिया ये हारी गला ये हारी की माडो खाई की इन इंडिया रे पसला इंडिया रे पसिला ता आगरे इंडियन ट्राइब देखाले इंडियन ट्राइब्स एंड सेंट्रल एशियन ट्राइब लड़ई हला आमे सबले हारिउ ब्रिटिश कहिबा तेणु करी इंडियन ट्राइब ता हारी गला जो सेंट्रल एशियन ट्राइब ता पर्शिया रो आस्तिला से इंडिया रे जीती गला से इंडियन ट्राइब को स्लेव बनी देला आ स्लेव मानकर सोशल डिग्निटी बेसी न थाए वी आर फॉर्मिंग कास्ट सिस्टम सुद्रस आ याकू की कोछ ना आर की कोछ ना ब्रिटिश कोछ एमते सिमिलरली एमती बहुत ट्राइब लड़िले सेंट्रल एशिया रे बहुत ट्राइब एठू हारिले माडो भयर से माने पळे आसिले इंडिया को इंडिया रे इंडियन ट्राइब्स को हरई देले बहुत केसेस रे इंडियन ट्राइब भी जितती बहुत केसेस रे इंडियन ट्राइब मान को हरई देले thus dominancy of this central asian tribes on that of the indian landmass not full indian landmass along that of the indus zone बुझियोची that is truly called as aryan invasion theory clear Yes, sir. Yes, sir. जहार बुझियोनी तो कह now we are making base for कुरुक्षेत्र महाभारत कास्ट वर्ण सब जिनस रे हमें बेस बनौछु ए क्लास रे कैट वर्सेस कैट कैट हरला इंडिया रे पसिला इंडियन ट्राइब को हरैला एमती बहुत कैट आछंदी इंडिया भितर को तले एमिति बहुत सेंट्रल एशियन ट्राइब इंडिया भितर को आछंदी आ इंडिया भितरे निजर ट्राइब थिले इंडियन ट्राइब्स निज भितरे भी लडुथिले इंडिया भितरे सेंट्रल एशियन ट्राइब निज भितरे भी फाइट थिला कैट वर्सेस कैट इंडियन ट्राइब वर्सेस इंडियन ट्राइब कैट वर्सेस इंडियन ट्राइब भी होतला बुझियोची जे जहा संगरे जोडी लडी पाला कारण ट्राइब मानकर खाली ट्राइबल लॉयल्टी थाए one tribe can fight with any other tribe for example today's africa
one tribe has got only loyalty for their own tribe. Thus, many Central Asian tribe have came into India. ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ୍ ଟ୍ରାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ୍ ଟ୍ରାଇବ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ହାରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ୍ ଟ୍ରାଇବ ର ସି ତାର ବି ସ୍ଲେଭ ହେଇଗଲା। इंडियन ट्राइब सेंट्रल एशियन ट्राइब लड़िले, इंडियन ट्राइब हारीगला, सी विनिंग सेंट्रल एशियन ट्राइब रो स्लेव हेगला। धर जोटे सेंट्रल एशियन ट्राइब लड़िले गोटे कैट हारला, सी भी स्लेव हेगला। दिस मच इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ लिसन, जेहेतु सेंट्रल एशियन ट्राइब ता सबले जितुची, आउ गोटे सेंट्रल एशियन ट्राइब तारा हारीची, से निज लोक बोली स्लेव हेला पर भी ताकू टिके भलो ट्रीटमेंट दोची as comparative to इंडियन ट्राइब। thus जो सेंट्रल एशियन ट्राइब ता हारी गला, they are called as, remember this term, they are called as dasas। और जो इंडियन ट्राइब ता हारी गला, they were called as dasyus। dasas and dasyus concept will come into picture। Sudras and Atisudras will come into picture। Atisudras in the due process of time will become untouchables। All the Sudras were not untouchables। This Dasyus will become untouchables। Those truly Indian tribes, but the true inhabitants of India। ताले जहाँ को तमे अतिशूद्र बोली कहूचो, according to the theory, they are the true natives of this place, the true owners of this place। They cannot be discriminated as such। Getting the concept of dasas and dasyus? Subhasis? Yes, sir. Subhasis? Yes, sir. Good। Central Asian tribe versus Central Asian tribe, गोटे Central Asian tribe हारी गला, इंडिया रे पसला, एमती बहुत आसिले कैट। आगुरु इंडियन ट्राइब थिले, एमानकर लड़ी हैला, जो इंडियन ट्राइब ता हारी गला से दस्यूज हे गला। इंडिया भीतर कैट वर्सेस कैट हैला, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब ता हारी गला से दासस हे गला। दासस मानकू कंपैरेटिवली भलो ट्रीटमेंट मिलला दस्यूज कठू। thus you know, in the due process of time ahead, they will become dasas and the Indian tribe will become dasyus, that is Sudras and Atisudras। Some caste system, Varna system ra मैं base पकड़ूँ। For example, I say you this, take it on yourself। You people might be very good, absolutely good creatures of this planet। तमें मानिक चलो तमें सबुठु भलो। Will you give the same position? तम घरे जदि किए आस्थुबो मेड गोटे बाई जदि कि आस्थुबो बासन माजिया को, will you give the same position and that जे तम घर को आस्थि बासन माजिया को same is of that of your mother, will you give the same position to that woman along with that of your mother? You'll never do it। तम घरे जदि ड्राइवर थिबो तमे ताको भाई भी रखथिबो, तमे सेम पोजीशन निज भाई रो पोजीशन ताको तमे केबे दबनी। दिस इज नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी। से लड़ीची ट्राइबल लॉयल्टी अछि, लॉयल्टी सबले ट्राइब करूतला, से गोटे कोन रहिची ट्राइबल लॉयल्टी रहउची, ट्राइबल एनिमिटी अछि, जोले ट्राइब लड़ी चंती गोटे स्लेव हे जाईची, ताकू इंफीरियर ट्रीटमेंट ही दिया हो। दिस इज ए नॉर्मल कंडीशन। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस एने कौन छी ना ताकर कौन छी लाइफ टा नोमैडिक हे के अछि। thus these people will become slaves। और slaves रो worst victim सबले तार women category हो, hence women victimization was also there। केमिति will see to that part। dasas dasyus clear, sudras atisudras base clear? Yes, sir. Now listen, we will come to the concept of God। Understand? Now tell me, anyone of you just tell me, what is God? God माने God? Sir, an ideal
Okay, then The protection from every auspiciation. okay, then what? Try to understand. God will come into picture. Other factors are there. Let's know now. Punthare mu kahibi make running notes. Now you know about dasas and the shoes. Notes will be given though. Dasas and the shoes. Aguru यहाँ पर कभी dasas the shoes. You should be in a position to say. यहाँ पर कभी cat तू बुझी जो cat माने कौन? War कौन कहीं हला? Now you are in a position to say why British came out with something called as Aryan invasion theory. This, that, and all. Now there is something called as make notes. Notions of God. Notions, ideas of God. Mane dekh. Go to the ancient days, archaic days. Dinno rati kaun paigi houtla. Human beings are not aware. Sikal dekhla kyote asila gote big light that is sun. Sun asila dinno aigala sun ta set ହେଇଯାଉଛି. ଏଟା continuously ଚାଲିଛି. ତାପରେ ଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଆସି cyclone. They were not aware about the pressure difference. ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଆସିକି ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିବ. Hence they have started deifying. ମାନେ ସି God ମାନିବାକୁ ଚାଲିଲେ. ଥରେ କଣ ଆସିଲା ସାପଟା ଆସିଲା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଲୋକଟା ମରିଗଲା. ତ snake might have some power, right? ଦିନେ କଣ ନା କଣ ହେଲା ନା flood ହେଇଗଲା. Flood କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? No one is a position to know. Natural forces କୁ God बोलिकी मानिकी चलला जोठी reason काम करूनी human intellect से God को नहीं आସୁଛି. That is called as, in short, that is called as लिखिवा naturalistic notion of God. Natural forces को scientific reason से दे ही पारुनी. That is called as naturalistic notion of God. Next, but the most famous is energy first. Most famous is personalistic notion of God. Write it. Personalistic notion of God. माने जेमती हमरो विष्णु शिवा आज जागर आज समस्त जाइथिबो महादेव मंदिर मोरलेस इने भी कहिथिबे लोक जाय कि लाइन ठेइथिबे. Personalistic notion of God. Human intellect or emotions or passions cannot just be satisfied with those vague concepts of nature. Thus we want something personified. आमे मंदिर गले आम आगे ठाकुर ठिया जाती तेणुक आमको लगे माँ शुणुची बोली. तो आमर गोटे इमोशनल साटिस्फैक्शन आसुची. तुमर प्रिलिम्स क्लियर हो न हो मेंस क्लियर हो न हो बट यू गॉट दैट फेथ. Hence we then what we did, natural forces को आमे ह्यूमन फिगर दबा स्टार्ट कलु. That is called as personification of the natural forces. इंद्र भगवान, मारुत भगवान, getting air god, fire god, storm god, natural forces को हमें personify कलु. That is called as personalistic notion of God. तापर human being आगु को आहुरी बढ़िला. कहला ओ there cannot be multiplicity of gods. जदि एमती हबो then two gods or three gods might fight against each other. ताको नेचर अलगा, फायर नेचर अलगा, पानी नेचर अलगा. से माने निज भितर बोध हुए लड़ाई कर दी पारंती. No no no, there cannot be multiplicity of God. There has to be one God and it cannot be personified. That is called as impersonalistic notion of God. Islam, Christianity, one God concept. Multiple God concept. Hindu, Advaitic Vedantic says there is one Brahma. We are not going over there. Normal thought process जो हमें जाऊँ we are saying that. So there are three notions of God: naturalistic notion of God, personalistic notion of God, make running notes, naturalistic notion of God, personalistic notion of God, impersonalistic notion of God. सब जिनसर loopholes भी अच्छी, counters भी अच्छी. That is not needed. Now coming back to the topic, if the Aryans were nomadic tribes, cows, they were the cow herders or sheep herders,
nomadic pastoral tribes, they do not have much of the knowledge of agriculture. It was very natural that they would be in the first or second stage of God or notion of God. That is, they have worshipped the natural forces. Then they have personified them. Thus, the gods will not be Brahma, Vishnu, and Mahesh. Brahma, Vishnu, Mahesh, Durga Ma, Parvati Ma, सेमती नथिबो इने ताले किए थिबे ना natural forces गरा थिबो. Hence fire god will be there, storm god will be there, that is called as Maruta. Water god will be there, that is Varuna. Fire god will be there, that is Agni. And the tankar ki god thibo na leader thibo, he will be called as Indra. Thus the god concept, see, God has created us or not could be a question mark. But we have created the concept of God or the notion of God is a reality. Geography will change, understand this, huh? Geography will change, the nature of your God will change. आसाम रे केबे कहिबेनी कि मते वर्षा दियो बोली, किंतु राजस्थान रे कहिबो. Thus devotees demand from the God will change, thus the nature of God will change, thus the God will change. India has enormous diversity of geography, various geographical needs, demand of the devotees from the God is different, thus God is different, thus we have enormous gods and goddesses. Thus polytheism is a practical reality in India. बुझेला? Yes, sir. Sir, the nature of a god situation wise change होतले कि सत्य बोल. अरे सिचुएशन वाइज कोन देख, पुरी रे ओडिसा रे जगन्नाथ अछंती प्रभु. हमर एठी चाउल हुए, हमर को हबो महाप्रसाद रे अवडा हबो. Yes, sir. राइट. Yes, sir. यूरोप रे चाउल हुएनी, सेठी लागिवनी. Okay. Let me go in a very specific way. Islam rose in a place that is sandy desert. से पूरा जोन टा ही desert. There is homogeneity of geography. माने अरब रो ज्योग्राफी रे एठी गोटे लोक जहा कहूची, एठी लोक भी सेया कहूची, सेठी लोक भी सेया कहूची, एठी लोक भी सेया कहूची. समस्त डिमांड गोटिए कि आज्ञा माटी फाटी तो नाही, खाया तो मिलुनी, शिकार करी खाया पे, दैट इज अगेन ए डेजर्ट. गोटे काइंडली गिव अस ए फॉरेस्ट, सॉरी अरे अरे कौन डेजर्ट रैबिट और डेजर्ट स्नेक जहाँ मिलची आज्ञा हम गोटे मिली जाऊ. बहुत ट्राइब्स अछंती इस्लामिक जोन भीतर, इस्लामिक जोन तो नथला सेतबेले, अरबिक जोन भीतर बहुत ट्राइब्स अछंती. जुआडे जाओ सियाडे वाली, everyone is asking for something called as the food from the same god. Thus there could be one god because of homogeneity of the geography. God कोठू गोटी डिमांड होची तो तमर गोटे गॉड हेई पारुची. Thus Islam has one god. Europe रे snowy desert, thus more or less similar demand is there, so there could be one god. बुझियोची. Thus Islam has one god concept, thus Christianity has one god concept. से geographical needs को satisfy करला बोली अरब्स रे और अरबिक लैंड रे इस्लाम सक्सेसफुल हैला. यूरोप रे Christianity सक्सेसफुल है. You cannot have one god concept in India. We have enormous geography, we have mountains and we have rivers, we have plains, we have deserts, we have everything. So multiplicity of God is a natural essence in India. Homogeneity in India is suicidal. We do not want. Heterogeneity is needed because of its beautiful geography. We have created God or not, sorry, God has created us or not could be debatable. A theist might not agree with you, but no one can question the fact we have created the idea of God or notion of God. अरबिक जोन रे बहुत खरा हुए, गरम हुए 50 डिग्री. जदि सेठी मद पीबू ताहले मरजिबू, इस्लाम रे हराम बोली कहला. यूरोप रे बरफ पड़े, जदि मद न पीबू ताहले मरजिबू.
Hence, you can go to a church with a wine bottle in a hand and show it to the crucified great Jesus. सेटा तोर प्रसाद हे जीवो एठी हराम हे जो सेठी हलाल हे जीवो hitting the same god, but nature changes. Now you cannot say now Muslim cannot go to Europe and cannot say कि तमे माने मद पिउचो भूल करचो कहि परिबुनी, because it is their geography, it is their culture, it is their thought process, it is their notion of God. किंतु अरब रे मद पी परिबुनी, इंडिया रे पिया कथा नुह पी दोछ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हमर भी गरम जगहटा getting. By knowing this concept, so it is very natural that the Rig Vedic people will worship the nature and they will personify the nature in the form of Agni, Maruta, Varuna, and the leader, king of this god will be called as Indra. Purandara. We'll deal with it. Just wait and watch. We're still dealing with God. Now listen. So Rig Veda, कौन करिवो ने जो गॉड मानकर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स. माने तू प्रे करछु गॉड मो पे ए कर दे, मो पे से कर दे. ना ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेयर ताले कोन रहइबो. माने कोन थिले बेसिकली दे वर नोमैडिक ट्राइब्स. गोटे जगह आ गोटे जगह को मूव करचंती. जेहेतु नोमैडिक ट्राइब्स दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. They do not have a settled life. Thus there was no significance of land. Land ro किछि significance नहीं कारण से मूव करी के आ गोटे जगह को पळौची. So land was not the wealth in Rig Vedic age. जेतो ने सेटल न करछु सेतो ने लैंड रो किछि वैल्यू नहीं. They were nomads, pastoral nomads. Thus से गाय नहीं रहउछंती गोटे जगह रो आ जगह को. The value was of cow. So the highest wealth was cow. बुझला जो ट्राइब पाखरे जेते गाय अछि से ट्राइब सेते पावरफुल. अनुकरी वार इन हबो गोटे ट्राइब आ गोटे ट्राइब भितरे जो ट्राइबटा हारि जीवो सेमना स्लेव हेबे से मानकर गो वंश को एमाने भी नहीं जीवे. तो मोर नंबर ऑफ काउज यू हैव द मोर पावरफुल यू विल बी. Hence the war was called as, write this term and remember it, the war. So the war was for the cows. That war was being called as Gavasti. Go mane gai. Vasti mane war or fight for cows. Gavasti. That was the essence of cows. एसो कथा में कोठु जानिछु ना ऋग्वेद रे अछि. ऋग्वेद has got 10 chapters, 10 mandals. Factual question. 10 mandals. Second to 7th 2 3 4 5 6 7. Second to 7 2 रु 7 मंडल होची oldest. Factual ना. First and 10th are the most new one, are the latest addition. जहां मझरे पड़ी गला से मझरे आस. This is a prelims question. Second ru 7 oldest, first and 10th latest addition. मझरे जा वाला सेरा मझरे आस. लैंड रो सिग्निफिकेंस नहीं कोन पाई नहीं बुझी गलो. Yes, sir. काउस रो सिग्निफिकेंस अछि कोन पाई अछि बुझी गलो. वार टा होची काउ पाई की. ओ सब कथा में केमथि जानुछु ना ऋग्वेदस रे अछि स्क्रिप्टेड. तो सर स्क्रिप्ट कोड असला सी. Vedas were called as Shruti and Smriti. Shruti ra literal meaning होची है. Literally Shruti means make notes, make notes. Shruti ra literal meaning होची the lowest sound that is audible to ears. माने मु जते धीरे कहले भी तो कानू सेटा सुभा जाउथो. That is the literal meaning of Shruti. सेतोले लेखा लेखि नथिला, पेपर नथिला, सब जिंस फाइनली ऋग्वेदिक स्क्रिप्ट गोटे जो लेखाई के आसीबो सेटा आसीबो as late as Gupta age. बहुत पर सेटा आसीबो. Gupta age जाके more or less, if not fully, more or less जिंस केमिति चलची ना श्रुति रे.
and smriti रे smriti माने मन रखिलु श्रुति माने सुनिलु तू सुनी की मन रखिलु that has become the culture गोटे जनरेशन आउ गोटे जनरेशन को से सुनौची से ताको मन रखुचंती hence this Vedic culture जोटा कि आगु काम गुण करिया is called as श्रुति culture or श्रुति and smriti culture. Now comes Parsis. Parsis माने जो माने पर्शिया रु आछंती जेमती इंडिया रे हेले तो इंडियंस सेमती पर्शिया रु आसे तो कोन ना पारसी और पर्शियंस. Persians used to worship कोन आर्यंस जहा को हमें कहू छै हला Persians used to worship fire god अग्नि जेमिति हिंदू मानकर और इंडिया रो ओल्डेस्ट और वर्ल्ड्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर होची वेदस ऋग्वेद पर्शियन मानकर भी इक्वल ओल्डेस्ट पर्शियन मान को मारी दिया गला सो इट्स अ डिफरेंट थिंग वेरी माइक्रोस्कोपिक पीपल आर लिविंग इन इंडिया टुडे when there was Islamic invasion on Persia, most of the people got converted and whooping people, majority of them got killed. Very microscopic few of them came to India. They are staying more or less in the zone of Gujarat and the Bombay zone. They are still living in India now. Parsi manakar primary god hochundi fire god. Hala. एठी जेमती हमर होची ऋग्वेद पारसी मानकर सैक्रेड टेक्स्ट होची ज़ेंद अवेस्ता the oldest text in Iranian language Avesta or Zend Avesta was contemporary that of Rigveda. अवेस्ता रे जो गॉड गॉडेसेस मानकर ना लिखाई छी ऋग्वेद रे भी सही ना लिखाई छी वरुण मारुत इंद्र अग्नि. Thus, Britishers are saying Persians came and invaded India. The question arises, why not the vice versa? Britishers were silent on this, so will not ask the question. हमें भी पचरिया नहीं पाठ बुझेला. Yes, sir. Yes, sir. 10टा मंडल अछि सेकेंड टू सेवेंथ होची ओल्डेस्ट 2 रु 7 1 10 होची लेटेस्ट बाकी तक मझिरे आसला. हमर सैक्रेड टेक्स्ट होची ऋग्वेद. सिमिलरली पर्शियंस मानकर पारसी ताकर होची अवेस्ता और ज़ेंद अवेस्ता रे सही गॉड गॉडेसेस का नाम लिखाई छी मोस्टली जोटा ऋग्वेद रे लिखाई छी. thus that shows that according to the British, that the Persians came and invaded India. Now you are aware of notions of God, naturalistic notion of God, personalistic notion of God, impersonalistic notion of God. I'm out to get detail the rise of Islam, rise of other thought processes, Christianity. I'm chadilu world history class paingi. Here it is not needed, so we left it. Now you are aware of the factor that why India has got multiplicity of goddesses, why homogeneity in India is suicidal. हमको दरकार भी नहीं मल्टीपल गॉड गॉडेसेस रे ही चलिबो मल्टीपल लैंग्वेज रे मल्टीपल कल्चर रे मल्टीपल फूड प्रोसेस रे थॉट प्रोसेस रे होमोजेनिटी हमको दरकार नहीं. पुरी रो कटक रो डायलेक्ट अलगा अल्प अलग किंतु अलगा. ईस्टर्न ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा रो फूड अलगा डायलेक्ट अलगा हबा भी कथा असुविधा किसी नहीं सकते. एब्सोल्युटली इजी बिकॉज़ ऑफ दिस डाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफी. यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ ले मोस्ट प्रोबेबली prelims से भी आसले. hopefully you are in a position to do it. Now think practically. Atlas खोली वर्षा समस्तटी एशिया पेज खोलो. Yes, sir. I cannot see you, right? I cannot see you, nor I am asking you to on your camera, hoping you are doing it because it is your exam. I am no more writing exams. You will write it. So what have been said in class, do it and behave like it is an offline class. Offline class is always better.
सो ऑफलाइन सेंटर हमें बहुत जल्दी स्टार्ट कर कटक रे आउ एंड होपफुली इन किट एरिया और मोस्टली इन किट एरिया इन कोठी भुवनेश्वर कटक भुवनेश्वर आम ब्रांच बहुत जल्दी एबे खोली जीवो यू कैन कम एंड अटेंड देयर टू नाउ ओपन योर एटलस एंड सी जहार मन अच्छी विजुअलाइज करिया सीख इंडिया पाकिस्तान सेम इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान को ऊपर लगी अच्छी देखे अफगानिस्तान देख लो Yes, sir. सुभाषिस पंकज Yes, sir. पंकज किशन Yes, sir. इंडिया पाकिस्तान गोटे जो ना अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान को लगी अच्छी मैप देखे ईरान देख लो इराक तापर सेक्टर पूरा जोन टा इंक्लूडिंग दोस वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग अफगानिस्तान अप टू रशिया सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान इंक्लूडिंग अफगानिस्तान Tajikistan, Turkmenistan, all the stan except Pakistan, see those stans, that is Central Asia. This part is West Asia. Jadi samane Persians, Jadi see on the map, Persians Jadi northwestern passage will be possible. It is very natural that they will get settled. See on map, see on map. First they will get settled in eastern Afghanistan. Subhash is off a mic. So it is very natural, right? पर्सिया रो वाला ईरान रो वाला देखे अफगानिस्तान को लागी किसी अच्छी से पास दे की पसुची माउंटेन पासेस इट इज वेरी नेचुरल प्रथमे जोठी तक प्लेन मिलिबो भलो जगह मिलिबो दे विल कम एंड स्टे देयर द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ दिस रिग वैदिक पीपल और दिस आर्यंस will be in eastern Afghanistan. पंजाब को सर अधा भारत पाखरे अधा पंजाब अछि आउ अधा पंजाब पाकिस्तान पाखरे अछि. When you will become IS officers or the powerful entities of this nation, take back that Punjab. 1947 has not yet been completed. बाकी अछि आहुरी कामो. Take that Punjab, right? Thus, the first settlement will be in eastern Afghanistan. See on the map. Eastern Afghanistan, तापर तळुक आसीबे ना माने towards the south टिके तळुक आसीले the most fertile plain of this planet, one of the most beautiful place to go, that is Punjab. So they will come and get settled over there. पंजाब रे सेतल की आस्तला हरियाणा भी आस्तला पंजाब हरियाणा से पूरा प्लेन टा इंक्लूडिंग पाकिस्तान पंजाब इंडिया पंजाब हरियाणा एटा पूरा गोटे प्लेन टा एंड लेट मी टेल यू हरियाणा भितरे होची दिल्ली हरियाणा रो गोटे माने ऑलमोस्ट भितरे होची दिल्ली जाट बेल्ट लोक रोन सेठी दिल्ली रे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जाट्स इट्स अनदर नोमैडिक पैस्टोरल ट्राइब्स दिस पीपल विल बिकम जस्ट वेट एंड वॉच जदी पर्सिया रू से बाहर ले पाकिस्तान विथ नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज देखि से possible, very natural. They will stay in eastern Afghanistan, the complete of Punjab, Pakistan Punjab, India Punjab and Haryana. ता भितर दिल्ली टाइप आछी तो दिल्ली क्रॉस करी टिके ईस्ट आड को जिबू you will reach something called as western UP. उत्तर प्रदेश वेस्टर्न पार्ट मिरट टा कोठी ना सेठी हला वेस्टर्न UP पार्ट रे बुझेला. thus I hopefully you can visualize on map. विजुअलाइज करि परछो एटलास देखि कि ना मु एठी मैप रे देखिबी प्रीति सर देखो Yes, sir. देखो. डन Yes, sir. स्वयं संपन्ना Yes, sir. अश्विनी Yes, sir. कविता Yes, sir. एटा होची प्रीलिम्स क्वेश्चन
एइने एइथि पय मु देखैली एबे तू घर को जिबू से जोन रो जत्ता बेले ज्योग्राफी क्लास हो तू गुडाए जागा सेठी देखिबू एटा बैक ऑफ द माइंड था इनिशियल सेटलमेंट क्वेश्चन होची इनिशियल सेटलमेंट ऑफ द आर्यंस सेटलमेंट से कहिनी से कहछि इनिशियल सेटलमेंट सेई जोन भितरु कोनोसी गोटे जागा उठे कि से तत प्रीलिम से पचारला तू अनिथु या छड कोन कोन हैला वेस्टर्न यूपी ऑफ फ्रिंज से बसछि से आगु को यही लैटर वैदिक फेज बेलू को ए माने पूरा यूपी बिहार क्रॉस करके बेंगल जाय आसिले बुझौछि देयर शुड नॉट बी एनी सेंस ऑफ इनिशियल सेटलमेंट रे से एठी बसले एने हम आगु को कुरुक्षेत्र करिवु as of now wait thus I was showing this place on numerous times ये जो region को that region in Rig Veda is called as Sapta Sindhu Sindhu माने Indus River now go to your atlas and again see the Indus को तू बाहर ची देखे Indus को सॉरी ची देखे go to India map and check out normal border India map ताला देखे Indus को बाहर ला एमती जाकी कोठी पड़िला अरबन सी रे पडुची की आ तार पांचटा जाको ट्रिब्यूटरी देखे देखाला Yes, sir. Yes, sir. पांचटा ट्रिब्यूटरी देखे ताकू मन रखे विजुअलाइज करे या पर इंडस कहबी तू आखी बंद करिकी एग्जैक्टली तोरी एटलास तते देखा जिवार अछि प्रिलिमिनरी हॉल रे मते सेया दरकार आगु को ज्योग्राफी क्लास तू करिबू गोटे गोटे नई जो पट जाउची सेतरे प्रोमिनेंट सिटीज किछि अछि वैलीज किछि अछि लेक किछि अछि ज्योग्राफी सार करेबे मु करेबी न छाड़ दे तू खाली देखे तार कोन ना कोर्स को कोर्स से जाउची अफगानिस्तान एटा हला पांचटा तार ट्रिब्यूटरी रवि व्यास सतलज चेनाब झिलम प्लस इंडस से छटा हला अफगानिस्तान रे आउ गोटे नदी अछि ता ना होची कुभा कुभा KUBHA इंडस गोटे पांचटा ट्रिब्यूटरी 5 + 1 6 आउ गोटे प्रोमिनेंट रिवर अछि अफगानिस्तान रे दैट इज कॉल्ड एज कुभा 6 + 1 7 ए सातेटा नई रो कोन ना वैलीज रे ए सेटलमेंट ता कोनला प्रोमिनेंटली हेथिला ऋग्वेदिक रे ए जोन टा को कोला ना सप्त सिंधु लैंड और सप्त सिंधु रीजन देख पूरा स्टोरी रे गंगा कोठी नहीं thus the Rig Veda which is the most sacred text of Hindus in that Ganga is not a holy river rather Saraswati is Zen अवस्थारे जोटा कि पारसी मानक सैक्रेड टेक्स्ट सरस्वती is called as Hakravati according to Rigveda Ganga is not गंगा कथा एटी आसीनी गंगा जाके लोक पहुंची नांती लैटर वैदिक फेज रे हबो जतले से यूपी भीतर पसिबे उत्तराखंड भीतर पसिबे बिहार भीतर पसिबे तापर बेंगल को आसीबे गंगा देन विल कम नाउ इट इज इंडस 5 tributaries and Kubha सातटा नदी 5 tributaries पूर्ण तरह देखे मैप रे इंडस कोर्स देखे मन रखे पांचटा को नदी देखे किए कोठी आसी की मिसिची देखे पूरा कोर्स मन रखे अफगानिस्तान रे आउट थिला कुभा टोटल मिसी सातटा हला ऋग्वेदिक होची द लैंड ऑफ 7 रिवर्स सप्त सिंधु sacred is not Ganga rather Saraswati another river जैन अवस्था रे ताकू हकरावती बोली को आउची सप्त सिंधु रीजन now you know very much well about Dasas and Dasyus cat versus cat versus IT Indian tribes IT Dasas and Dasyus, Sudras and Atisudras in the due process of time will come into picture. Nomadic tribes
Land was not the wealth, cow was the wealth. In the search of pastoral green lands, these nomads entered India through northwest passes, thus got settled in eastern Afghanistan, Punjab, including Pakistan Punjab, जोटा कि तमाने बहुत जल्दी नब, Pakistan Punjab, Indian Punjab, India Punjab इधर हरियाणा भी आछी, and western UP, Sapta Sindhu region, Kubha in Afghanistan, Saraswati, sacred river, also called as Hakravati in Jendavesta. यहाँ को पाखरे horse ऊपर capability थिला, Central Asians ना, horse is an Central Asian animal, stony desert animal सेटा. इंडिया रे ब्रीड करके रखी दिया गला, that's a different thing. Horse ऊपर capability थिला, thus they won the war in India to enslaved us. You know about the tribal conflicts, Dasas and Dasyus. Ask doubts. कहाँ कौन डाउट हो सकते? Any doubts? No, sir. Now be ready for the names, huh? Be ready for the terms. We'll specifically handle prelims now. Very specifically we'll handle prelims through prelims through question as. What is inside clear regula? Now let's come back to CAT and IT. CAT bane Central Asian tribes, IT bane Indian tribes. तो पछे Central Asian tribe हेता आउ गोटे one cat will fight another cat, one IT will fight another IT, one cat will fight another IT, because the tribes has got only tribal loyalty. The tribe in Rig Veda is called as Lekhu Jana, Jana, Jana. So loyalty was for Jana. Jana pada mane pada, feet. Pada mane hochi pada, feet. Nomadic tribe ta thila, गोटे जगह आउ गोटे जगह को जाउथला, ता पादटा स्टेबल है कि गोटे जगह पडु नथिला. जो दिन से एग्रीकल्चर ऊपर मास्टरी नहीं जीवो, आउ से सेटल्ड है कि रही जीवो, ता पाद सेटल है जीवो, सेही दिनठू लैंड रो सिग्निफिकेंस आछियो, से सेठी बसी की एग्रीकल्चर कला. Thus जन will become जनपद. जन रे सी मूव करछि गोटे जगह रु आ गोटे जगह. पद माने फीट, जो दिन से सेटल ही कले ना 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 मु आ काट जीवी, मु एठी रहिबी, एठी जंगल काटिबी, कारण ता परे लुहा पळे आछियो, आयरन. जस्ट वेट एंड वॉच. लेटर वैदिक फेज. एठी गछ काटिबी, एठी एग्रीकल्चर करिबी, सेटल्ड लाइफ आनिबी. दैट सेटल्ड लैंड मास, दैट पीस, दैट यू नो दैट सोसाइटी इज कॉल्ड एज जनपद. ऋग वैदिक फेज रे जनपद नाही, जन अछि. जनपद लैटर वैदिक फेज रे हबो. सेटल्ड लाइफ ऋग वैदिक रे ताहले नाही. ऋग वेद रे कोठी मेंशन हेनी जनपद. ऋग वेद रे खाली मेंशन हेछि जन. Loyalty for Jana. Thus, the one cat Jana can fight another cat Jana. One IT Jana can fight another IT Jana. They will fight against each other. बुझेला? Yes, sir. Mostly पांचटा जन थिबे. आर्यन्स मानकर हला कैट मानकर पांचटा जन थिबो. दे आर कॉल्ड एज जन माने ट्राइब्स, पंच जन. बुझेला? पंच जन. सिमिलरली सेमान निज निज भीतर लड़ुथिबे, अन्य ट्राइब्स कोठु भी सेमाने हेल्प नौथिबे. इंडियन ट्राइब्स को एई जो पांचटा थिला पंच जन, ताको भितरु जोड़े पावरफुल थिले. गोटे भरतस, नाम रखिबो, गोटे भरतस, गोटे त्रिस्तु. भरतस त्रिस्तु पंच जन
पांचटा ता भितरु जोड़े मेजर पावरफुल थिले भारत. नाउ वी आर मेकिंग बेस फॉर महाभारत कांसेप्ट. कुरुक्षेत्र इन सब आसे तू देखत भारतस एंड त्रिस्तुस. भरत बोली गोटे ट्राइब थिला ता किंग ना भी थिला भरत और वाइस वर्सा. से किंग जोगु से ट्राइब ना भरत किबा ट्राइब जोगु से किंग ना भरत, बोथ आर ओके. The most powerful tribe were the Bharatas, and the second most was Tristus. Now, this Bharatas and Tristus were supported by a great priest. जहाँ की ना तमें सुनी थी वो, it is priest Vasishtha. पंच जना गोटे नुआ टर्म आसला दासस दस्युस गला गोटे नुआ टर्म आसी ने तमागरे पंच जना. 5 tribes, Aryan tribes, cat tribes, Central Asian tribes वाला इंडिया आसी दिचन से पंच जना. सेथुरु जोड़े होची गोटे होची भारत गोटे होची त्रिस्तु. याको गुरु ना होची वशिष्ठ. So Vasishtha is not a mythical figure, it's a historical figure. Now Bharata will in the due process of time with the guidance of priest Vasishtha will become very powerful. Thus 10 other tribes, 10टा अन्य ट्राइब जोड़ी हे जिवे against the Bharatas, like that of Modi विरुद्ध रे India alliance has come into picture. India alliance has now come into picture. Similar concept was there when Indira Gandhi was there. All the opposition were against Indira Gandhi. They got combined up. Similarly, Bharata clan को हरेवा ପାଇଁ कि 10टा ट्राइब आसी मिसिले. से 10टा भितरु 5टा होचंती किए ना आर्यन ट्राइब्स, 5टा होचंती इंडियन ट्राइब्स और नॉन आर्यन ट्राइब्स. Bharatas versus these 10 tribes, there will be a war. Bharatas will win and hence will become the superpower of the area. जो 10टा जो hence it is called as battle of 10 kings. Thus राजनम संघर्षम और battle of 10 kings. पंच जना 5टा ट्राइब थिले सेथरु जोड़े पावरफुल ट्राइब होची गोटे त्रिस्तु गोटे भरत. ताकर गुरु ना कोन ना वशिष्ठ. Bharatas in the due process of time will become powerful. ताकू हरेया पे कि 10टा ट्राइब मिसिबे और 10टा किंग मिसिबे से लड़ाई हवा. भरतस जीति जिवे. 10टा किंग को विरुद्ध रे वार हेतला. It has been called as battle of 10 kings. बुझला. But Bharatas were very smart people. से जो 10टा किंग जो थिले सेथुरु 5टा थिले आर्यंस और 5टा थिले नॉन आर्यंस. सेथुरु गोटे थिला पुरुष आर्यंस के भितर पुरुष. भरत ट्राइब पुरु ट्राइब संगे हाथ मिसई दबो ताको मिसई दबो स्लेव बनेबनी मिसई की इक्वल कर दबो. A new tribe will come into picture that is called as Kuru के कुरुक्षेत्र. Later Vedic phase रे जेतले में सेटल ही जबे कुरु ट्राइब ता जो जगह रे that place will be called as जो क्षेत्र रे सेटल हेबे that will be called as कुरुक्षेत्र. पंच जना भरत त्रिस्तु वशिष्ठ 10 kings, battle of 10 kings. Bharatas win. Join hands with the Kurus. Thus a new tribe, a new name will come into picture. Kurus. In the due process, we will see Kurukshetra or Mahabharata. मन रहिला. Yes, sir. Good. See, let's deal with the agriculture of these people. Now, what does that mean? I mean, करूथले कोन. See, ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି nomadic tribes, they are moving from one place to other place does not mean they were not aware of agriculture. They were aware of agriculture, they do not have a settled life. Earliest part of Rig Veda, plowshare, hoe,
फल लंगल विषय फल करने तार मेंशन अच्छी किंतु आमको ग्राउंड रे किसी एविडेंस मिललानी जदि फलर मेंशन अच्छी आउ तार किसी एविडेंस मिलूनी ताहले आमे आगु भी देखछु तार कंक्लूजन होची प्रोबेबली द प्लाउसेयर वाज मेड अप ऑफ वुड से काठर बनाइथिला तो तेणुक से कह ना डिकम्पोज करी किंतु ऋग्वेद रे कुआ होची कि ऋग्वेद पीपल वर अवेयर ऑफ सोइंग हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मंजी बुणी पारुथिले धान काटी पारुथिले आ थ्रेसिंग भी करी पारुथिले माने से माने एग्रीकल्चर विषय से माने जानिथिले बुझला एग्रीकल्चर होउथला किंतु सेटल लाइफ रे एठी रहिबी एठी सबले मु एग्रीकल्चर करबी सेमति नथिला प्रोबेबली शिफ्ट एंड बर्निंग एग्रीकल्चर थियो बोली ताकू लागुछ ओके काउ वाज द मेजर वेल्थ गाई थिला ताकर होची मेजर वेल्थ thus war was for the cow जोटा कि हमें इन एबे कले the war was called as gavasti okay now there is a big twist war गोटे हला god concept has already came into picture ताले priestly class गोटे थिबो बुझोची we'll see that there was something called as पुरोहित परियाद and हमें को देखछु ना गिफ्ट्स वर मेड टू द priestly class वार रे priest को न पछारी की किछि काम होइनी gifts were being given to the purohita class one rakha gifts were being given in the form of cows and women slaves तो सर ऋग्वेदिक phase तो women dignity थिला ना थिला NCERT is writing this so we are saying it women slaves were being given and the cows were being given tale women jaddi women dignity thila tale women slaves how that is a possibility the possibility is like this जो वर्गटा हारी जाइछि जो माने स्लेव्स हेकी बसचंती the highest victim always even today it was is and will always remain the highest victim will always be a woman thus probably now these women will become the slaves of that of the winning class or they were been given as gifts the women were being given as gifts to that of the priestly class hence cows and the women slaves were being given but never in terms of measurement of land because land was not a part of wealth another term is called as ayas one rakha like it ayas 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 means copper or bronze माने कोन you know better copper plus tin is called as bronze ayas means copper or bronze ta mane they were aware of the metal working but as they were nomadic tribes and they have not yet reached the ocean पाखे से माने एतोल जाके पहुंची नांती as they have not yet reached the ocean so we are not very much sure no ta mane there is no evidence of trade sea trade होनी कारण से माने ओशन पाखु एतोल जाके आसी नांती गेटिंग ऑन द मैप ईस्टर्न अफगानिस्तान पंजाब हरियाणा वेस्ट फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी माने जेहेतु ओशन पाखु आसी नांती तेणु करी ओशनिक ट्रेड होची ना नाही तार किछि होची बोले हम पर किछि एविडेंस नाही अन्य ट्रेड एंड कॉमर्स होची ना ना सॉरी तार भी किछि हम पर एविडेंस नाही ट्रेड एंड कॉमर्स कथा आसीबो जते तमे सेटल्ड हे जीवो latter Vedic phase asibo ayas means copper no clear evidence of trade they have not yet met or seen that of the ocean ऋग्वेद रे गोटे टर्म अछि समुद्र माने ओशन किबा सी सेटा हमें क्लियर नाहु but one thing is clear that is probably denotes collection of water समुद्र टर्म अछि ऋग्वेद रे सेटा ओशन हे नथिबो कारण माने ओशन पाखरे पहुंची नांती अर्ली ऋग्वेदिक फेजेस पहुंची नांती ताले से समुद्र बोध हुए कलेक्शन ऑफ वाटर को कहउथिबे ayas मन रहिला now the few terms which you know dasas dasyus panchajanas ता भितरे त्रिस्तुज एंड भरतस battle of 10 kings
उरुस संगे हाथ मिसिले कुरुज गवस्ती कॉपर कहले आयास समुद्र कलेक्शन ऑफ वाटर दिस मच टर्म इज क्लियर मन रहिला Yes, sir. Yes, sir. the moment I'll ask you ayas you should be in a position to say this now listen बुझ ठीक रे बुझ जिनसटा स्टार्ट हो छला nomadic tribes टा आज के when you know very recently I was in Arunachal Pradesh taking class in Itanagar it's a tribal state सेठी आज भी ट्राइबल कम्युनिटी बसुची गाँ मानक भितर तांकर गाँ को कहती बस्ती बस्ती मान भितर ट्राइबल कम्युनिटी आसिक बसिबो और ट्राइबल कम्युनिटी भितर जहाँ जजमेंट दिया हिजिबो ताकू लोक मानिबो नले सोशल वर्कर तार हिजो ही कैन गो टू दिस कोर्ट दैट कोर्ट एंड ऑल से सब करि परिबो जाई परिबो किंतु तार ईटानगर भितर किंबा तार ट्राइब भितर जदि से बस्तीर कथा न सुनला किछि अस्तित्व नै he or she will be outcasted immediately this is the significance of the tribal community in Arunachal Pradesh even today think of those days when there was truly a tribal society thus king was not very powerful king kono king tale ki hobo gradually that will become hereditary that's a different thing king concept ta puru start hala karon जेहेतु ट्राइब माने बहुत लड़ाई करथले निज भितरे दे नीड सच अ मैन हु कैन प्रोटेक्ट द ट्राइब along with other men गोटे एमती मैन दरकार जे लीडरशिप नहीं परथुवो बेसिकली किंग रा काम होतला लड़ाई करिया जेहेतु से समस्त को बंचौतला से गोटे कहला रेस्पेक्टेड पोजीशन पाल्टी गला से तार तापर से गोटे वारियर क्लास बाहरला gradually they will become something called as kshatriyas just wait and watch tribes fighting against each other so they were in need of a man along with other men who can take up the lead and fight against other tribes in the due process of time he will become rajan or the tribal chief or will become the king basically the role etically limited thila gradually se role ta badhuchi that's a different thing thus the gradual सेटा कौन है जो ना hereditary है जो agreed to tribal organization सब रहुची so it has so the king has limited power now we need to know those tribal organizations the first tribal organization is similar as that of ours today gram sabha हमर जेमति ग्राम सभा अछि 73rd constitutional amendment पर similar gram sabhas माने all the eligible people including women ସେମାନେ ଆସିକି ଗାଁର କିମ୍ବା ବସ୍ତିର କିମ୍ବା ସେ ଟ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବେ ସେମାନେ ଡିସିସନ ନେବେ ସବୁ ଜିନିଷର ସେଇମାନେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ ପଠେଇବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ସମିତି ଏଟା ହେଉଛି ସଭା ସଭା ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ସମିତିକୁ ସମିତିରେ କ'ଣ ନା ଏଟା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା डिसीजन मेकर्स सभा सिलेक्ट करिवो काहाकू ना समिति को समिति गाइड करिवो किंग को ओवरऑल सभा गाइड कोछि ताले किंग पाखरे एब्सोल्यूट पावर नाही से सभा और समिति रो कथा माने कि ताकू चालिया को पड़िवो ग्रेजुअली किंग विल बिकम पावरफुल करप्ट दिस दैट एंड ऑल दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट नाउ बाय द टाइम किंगशिप or Rajan has become hereditary, but under the control of tribal organizations. There were 3 tribal organizations basically. First is Sabha, the same Gram Sabha as we have today. Eligible people will come and sit over there. They will select out Samiti. Samiti रे कौन बट ए समिति रे किछि लोक जाई बसिबे सेठी कोन हे परिबो ना पॉलिटिकल डिसीजन निया हबो The third one is Vidhata, Sabha, Samiti, Vidhata. Indian context में आज भी even today, the unmarried men are pollution. India is the only country India is the only civilization philosophy to say this. Rest of the world रे women ta pollution. India रे women pure, divine.
Man pollution, unless and until he is married, he is a polluting agent. ଯେମିତି ତମ ବାପା ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବସି ପାରିଲେ. Now I am not yet married. ମୁଁ ଘରର କୌଣସି ପୂଜା କର୍ମରେ ମୁଁ ହାତ ଦେଇ ପାରିବିନି. ମୋର ବଡ ଭାଇ ଦଉଛି. ମୁଁ ଯାଇକି ନଡିଆ ନେଇକି ଆସୁଛି ତଳେ ଥଉଛି ତାପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏମାନେ. ବୁଝୁଛ? So I am now what I am now a pollution. Woman is divine. Vidhata, congregation of people for ritual purpose. Getting? So these three tribal organizations were what? Now control on that of the king. So king was not absolute unless and until later Vedic phase will come into picture. Thus, women respect was at its peak. So they can be part of Sabha and Vidhata. Getting what I'm saying? Bujela tribal organizations, king, hereditary. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी tribal, Yes, sir. कोई भी tribal organization, you should be in a position to say Sabha, Samiti, Vidhata, Dasas, Dasyus, Gavasti, Ayas, Samudra, Bharatas, Tristu, Panchajana, Battle of Ten King, Sapta Sindhu, Indus, 5 tributaries, Kubha. सबु टर्म मन रहिला. Yes, sir. काहाकू गोटे धरिकी बुझेई दबु. Yes. जे क्लास सरला पर यदि तमे काहा गोटे धरिकी बुझेई परन ताले तोर आइदर तू सुनिनु किबा सुनला पर भी बुझेई पालुनी ताले तोर टीचर खरा. Last 5 minutes, then we'll go. So women were members of Sabha and Vidhata. Okay. How to achieve? Why not Samiti? We'll see to it later. Okay, now let's see now. Then why women? If women respect was at its women's slaves thila, women's slaves thila. Tal kaharo houthe mainly that jo tribe ta hari jaichi tanko women mostly slaves houthe. That the women respect thila, why they were not part of samitis? Because समिति सेतल कोन होतला जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैला बेसिकली किंग रो काम रहउतला वार लड़ीबा. ट्राइबल अटैक तांको ऊपर कोन होतला ना फ्रीक्वेंट होतला. तेणु करी वार रे मस्कुलिन एस्पेक्ट बेसी दरकार है. मस्कुलिन एस्पेक्ट बेसी दरकार है. सो वुमेन probably by themselves they stayed away from this. तू सेठी जाए कि दया माया war रे you cannot show love, compassion, accommodativeness. You cannot show those things. Thus probably women by themselves stayed away from samiti. Now that will become a culture. That's a different thing, and other factors are there. Thus samitis re women nathile, they were not forced not to be there, rather deliberately they choose not to be there because the works were on that of the issues of war. Thus women were not part of the samitis. In day-to-day administration, the king was assisted by देख भाई गॉड पळे आसी ताले ओटे प्रीस्टली क्लास थिबो. that priestly और जो priest king को support करिवो they have been called as purohita, normal purohita. They were rewarded with as usual women and cow. Okay, king sangre king ro basically काम अछि लढिबा. ताकू soldiers he need what? Soldiers also. That soldier class was called as senani. The priest was called as purohita. The soldier class was called as senani. Nomadic tribes ta छोट छोट ट्राइब रे समान अछंती. गोटे ट्राइब आउर ट्राइब को मारछि, गोटे जगह आउर जगह से मूव कर जाउछि. एते छोट ट्राइब भीतर टैक्स कलेक्शन रो किछि दरकार ही नथिला. इंटरडिपेंडेंसी अछि. जने आउ जणक नीड्स फुलफिल
कर दूची एते कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं. Thus there was no need of collection of taxes. Tax पड़ुनी. Thus there was no officer for collection of tax. So there was no officer also for administration of justice. किसी स्पेसिफिक ऑफिसर नहीं. ग्राम सभा रे ही जीवो, नॉट ग्राम सभा सभा रे सेटा ही जाई परियो. किंग तक देख दे परियो. हेंस किसी स्पेसिफिक जुडिशियरी सिस्टम एठी दरकार नथिला. टैक्स कलेक्शन ପାଇଁ कि नहीं. लेटर वेदिक रे चेंज होवा. टैक्स कलेक्शन ପାଇଁ कि नहीं. जस्टिस दवा ପାଇଁ कि किसी कोन स्पेसिफिक बॉडी नहीं. लैंड टा वेल्थ नुह. काउटा वेल्थ. काउटा चोरी भी ही जाई पारे. काउ ପାଇଁ कि पहुंची ना वार होची. गवस्ती काउ चोरी को बचे ପାଇଁ कि स्पाई सिस्टम गुप्तचर. स्पाइज वर देयर. स्पाइज वर एम्प्लॉयड. पुरोहित, सेनानी, राजन, मनला टर्मोरा. Yes, sir. Should we continue or should we go for tomorrow? एतिकी पढ़ी आसीबू ना आउ. Yes, sir. कोन ये सर कोन Sir, आपनो इच्छा. अच्छा तो मोर छाड़. आर.एस. शर्मा पढ़ दी आसीबो समस्ते. Or else it is an absolute wastage of time if you are not reading R.S. Sharma. Without R.S. Sharma, you cannot do anything about administration. What about अच्छी आगू गौरी अच्छी. But see, try to understand. Nomadic tribes. Simple life. निज भितर कौन अच्छी ना चलती. एडमिनिस्ट्रेशन होची तांकर किंग अच्छी, सभा अच्छी, समिति अच्छी, विधाता अच्छी, पुरोहित अच्छी, सेनानी अच्छी. बेसिकली कौन होची तांकर काम. नोमैडिक ट्राइब्स टा कैटल हर्डर्स, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मोस्टली. नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट. मोस्टली से माने कहा को डील करछंती ना वार को डील. दे आर डीलिंग विद द वार्स. जेहेतु नोमैडिक हर्डर्स से माने नोमैडिक हर्डर्स, कैटल हर्डर्स ताकू पैस्चर लैंड दरकार है, ग्रास लैंड्स. So they will move from one place to other place provided other place has got that pasture land. Now that pasture land has to be maintained. For maintenance of that pasture land you need ता पे गोटे ऑफिसर थिला. ऑफिसर डज नॉट मीन्स कोन हेल्थियो. ऑफिसर ने ता पे कि आउट पोस्ट थिला. गोटे स्पेसिफिक लोक माने वेरी स्पेसिफिकली इट्स अ पावरफुल पोस्ट जाय कि पैस्चर लैंड रो मेंटेनेंस करिवो. कारण ताका पाखर बहुत कैटल्स अछथि. से जे ताकू मेंटेन करिवो दे वर कॉल्ड एज व्रजपति. अनदर टर्म केम इनटू पिक्चर. एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से तो टर्म पछाड़ी ब व्रजपति. Another term came into picture, right? Now, Vrajapati in the due process of time will become Gramini. Ta mane kono? We'll see to it. Just wait. Gramini mane head of small tribal unit. Border tribe ta achi. Small tribal units will come into picture. Other now leave it. From tomorrow we'll see what is Gramini, what is Vrajapati. How in the due process of time Gramini and Vrajapati will get clubbed up and will become a powerful post, right? What is Vish, what is Grama, what is Sangrama, social division kono. Tomorrow class will deal with caste system, varna system. चारटा का वर्ण डेफिनेशन हमें काली कर दवा. तो देखिए आगु को तापर म तकू बुझेबे नहीं. ऋग्वेदिक गॉड्स we are already done with. So tomorrow we'll meet at 12 o'clock. Be ready for that caste system and varna system class. After this class, more or less, your base will be done. In today's class, कार किसी डाउट रहिला? No, sir.
after reading your R.S. Sharma, I am really confident you are in a position to teach others. Clear? R.S. Sharma, kali padhi ki samajh asibo. Okay? Go. I see you tomorrow, 12 o'clock.